अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। इस टॉक में हम 20th सेंचुरी जो प्री वॉर पोइट्री थी वर्स की, एडवर्डियन एज भी उसके कहते हैं, एडवर्डियन पोइट्री भी, सॉरी जॉर्जियन पोइट्री भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने विक्टोरियन इरा की बात की थी। विक्टोरियन इरा के डिफरेंट नॉवल, ड्रामा और पोइट्री देखे थे, और विक्टोरियन एज में हमने अल्फ्रेड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग को एज ए पोएट देखे थे। तो इसमें मतलब हम थॉमस हार्डी को देखेंगे और एडवर्डियन जो पोएटिक ट्रेडिशन है उसको देखेंगे। मेजरली जो है वो हमारा टी.एस. इलियट और थॉमस हार्डी एज ए वॉर पोएट, और हीट्स को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आकर शायरी जो है वो सिंबलिज्म की तरफ, यानी शायरी में सिंबल्स इस्तेमाल होना शुरू हो गई। शायरी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट टेंडेंसी की तरफ उसका रुझान पड़ता है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। After 1900, the romantic impulse became less rhetorical and its subject became simpler. Apart from Hardy and Reed's great talent were few. इन्हीं को इतने, ये दो अहम शोरा थे, थॉमस हार्डी और रीड्स, और लेटर ऑन इनमें जो टी.एस. इलियट है वो लेटर ऑन भी इसमें पार्ट करता है। Kipling's The Way Through the Woods is an example of a successfully nostalgic Edwardian poem, ना कि किस तरह यानी इस एज में आगे हम जो 1916 से 1918 से आगे की शायरी है, दैट इज कॉल्ड द पोएट्री ऑफ लॉस्ट जनरेशन, यानी खोई हुई। मैं आपसे ये इसमें जरा तफसील में बात करूंगा, यानी कैसा वो जमाना था जिसमें जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 1 छिड़ी और फिर वर्ल्ड वार 2 छिड़ी। यानी वर्ल्ड वार 1 जो है वो इतनी खतरनाक वार थी, यानी 4 साल तक दुनिया आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती थी, 4 साल तक। तो उसके बाद की जनरेशन थी जो कॉमन मैन था, ही वॉज वेरी डिसइल्यूजन्ड। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो एग्जिस्टेंस तक के जो बुनियादी सवालात थे वो रेज हुए शायरी के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। हु कैन बी द ह्यूमन, और इज दिस टू बी अ ह्यूमन टू फाइट अगेंस्ट द मैन। ये जो सेंट्रल क्वेश्चंस थे, ये क्योस डिसअपॉइंटमेंट को इन्होंने वो किया। तो ये वाली सारी चीजें जो है ना, इंसान जो है वो अपने पुराने जमाने को याद करता था। तो नॉस्टैल्जिक टेंडेंसी जो है वो एडवर्डियन पोएम्स में या जॉर्जियन पोएम में है, पोएट्स में भी और पोएम्स में भी। फॉर एग्जाम्पल ये पोएम देखें आप, इसकी किपलिंग की है। तो ये पूरे पुराने जमाने की, दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 years ago, यानी शायर आज भी जो है वो 70 साल पहले का सोच रहे हैं। Weather and rain have undone it again, and now you could never know there was once a road through the woods. यानी एक सड़क थी तो उसको तहस नहस मतलब वो किया था। पहले उन्होंने जंगल में से एक रास्ता बनाया था, और फिर वेदर एंड रेन ने उस जो रास्ता था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब हमें पता भी नहीं चलेगा, आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि 70 साल पहले यहाँ पे रास्ता भी था। There was once a road through the woods before they planted the trees. It is underneath the coppice and the heath. And the thin anemones, only the keeper sees that where the ring dove broods. कहते हैं कि जो मालिक होता है उसको पता होता है कि डॉव ने, फाख्ता ने अंडे कहाँ पर दिए हैं। And the badgers roll at ease. There was once a road through the woods. तो नॉस्टैल्जिया अगर आप देखेंगे, याद माजी, नॉस्टैल्जिया कहते हैं माजी में रहना। John Mansfield, W.H. Davies, and the Walter D. La Mare were Edwardians who also appeared in the first of the Edward Marsh's 5 anthologies of the Georgian poetry, which came out between 1912 and 1922. Successful anthologies कहते हैं कि जो collection of poems होती है ना, that's called anthology. Successful anthologies establish poetic taste
Palgrave's Golden Triary 1861 में embodying the Tennyson's taste sold well for a century. It was enlarged in 1890. Marsh preferred something more modest. इसी तरह का Abercrombie, Drinkwater, Gibson, less names इस तरह के जो आर्थर रॉबर्ट ब्रूक, J.E. फ्लिकर्स, ये D.H. लॉरेंस डिफरेंट किस्म के पोइट्स के नाम हैं, तो उन्होंने भी इसमें छापना शुरू किया. लेकिन हम इसमें देखेंगे कि हेडलाइन जो लिटरेरी हिस्ट्री थी sometimes pretends that Georgian poetry जो थी was deservedly replaced by the war poetry and modernist poetry. Later on इसके ऊपर modernist शायरी और जो war poetry थी वो छा गई. यानी जॉर्जियन पोएट्री का मतलब हम उसे जॉर्जियन पोएट्री एज ए हेडलाइन तो दे देते हैं कि आफ्टर जो पीरियड था, लेकिन हम इसे इन सारों को जॉर्जियन पोएट्री को प्री वॉर पोएट्री का नाम दिए हुए हैं ना, कि जंग अजीम से पहले का. अगरचे उसको जॉर्जियन पोएट्री का भी है, लेकिन जॉर्जियन पोएट्री से ज्यादा प्री वॉर पोएट्री है, और फिर ड्यूरिंग वॉर पोएट्री की हम बात करेंगे. तो yet war poets and the modernist poet appeared in the Georgian poetry, and Ezra Pound in the Oxford Book of the Victorian verse 1912 में उनके नाम जो है इंक्लूड है इसमें. जैसे मैंने शुरू में बात की है, तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट पोइट्स जो है इसमें थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करता जाऊँ कि थॉमस हार्डी बेसिकली नॉवलिस्ट, लेकिन he is basically good in novel and good in poetry. हुआ ये कि थॉमस हार्डी ने जो नॉवल लिखने शुरू किए, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं कि थॉमस हार्डी जो है वो पैसिमिस्ट है, कुछ कहते हैं रियलिस्ट है, कुछ कहते हैं मिलियरिस्ट है, और बहुत सारे चार्जेस हैं. लेकिन थॉमस हार्डी ने जो अपना आखिरी नावल लिखा ज्यूड द ऑब्स्क्योर, उसके ऊपर इतनी सोशल क्रिटिसिज्म हुई कि उसने नावल को छोड़ा और पोएम लिखना शुरू कर दी, पोएट्री लिखना शुरू कर दी. तो पोएट्री भी फिर उसने अच्छे अंदाज में लिखी. तो थॉमस हार्डी जो है वो 1928 में उसकी डेथ हुई है. तो he was at the later age of his age when he was जो 1900 ये पहली जंग अजीम छिड़ी, तो he had a very refined taste towards the poetry at that time, और उसका wide experience भी था. Thomas Hardy wrote most ambitious Edwardian poetry in the dynasts, 1904, 1906 and 1908. ये उसके published year है. An epic free verse drama on the Napoleonic Wars set in the various continental theaters. इन उसकी शायरी को वो थिएटर्स में गा कर पढ़ा जाता था. Napoleonic Wars set in the various continental theaters and in the Wessex, where Napoleon Bonaparte was expected to land. There are choruses of the spirits of the years and the pities, as in the Greek tragedy, यानी Greek mythology में जिस तरह के वो कहते थे, तो इसी तरह के choruses जो है थॉमस हार्डी की पोएट्री में भी थे. And Wagner's opera. It reward but rarely gets a reading. Its epic historical panorama and lofty viewpoints suggest a comparison between the Ezra Pound's Cantos and Eliot's Wasteland. यानी जो वेस्टलैंड में आपने वो पोएम पढ़ी होगी कि हॉलो मैन की ना, T.S. Eliot कहते हैं कि we are the hollow man, we are the stuffed man. The same was the stance and the tendency, जो inner tendency of the mind होती है, Thomas Hardy की भी हुई है. From this Hardy emerges with the solid qualities, but by common consent his best work is found scattered through the 6 volumes from the Wessex poems to winter words. He wrote nearly 1,000 poems. कहते हैं कि हार्डी से ज्यादा नज़में किसी ने नहीं लिखी. हार्डी से ज्यादा कहते हैं सिर्फ शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की नज़में ही हैं. इसके अलावा यानी हार्डी स्टैंड एट द 3rd number in the poetry of English literature. Hardy, Yeats and the Eliots who dominate the 20th century. ये 3 नाम अहम है. Thomas Hardy, Yeats और T.S. Eliot, who dominate the 20th century English poetry, differs hugely. Hardy can be read without preface or
इन हार्डी की शायरी के लिए तशरीह की ज़रूरत नहीं है. He discouraged theorizing by remarks such as there is no new poetry, unadjusted impressions have their value, and no harmonious philosophy is attempted in these pages or in any bygone pages of the mind. And that for matter, ये थॉमस हार्डी ने लिखा. His unadjusted impressions are miscellaneous, and the collections apart from the poems of 1912 and 13 are unshaped. Many were written before 1900, but his style did not change. थॉमस हार्डी का स्टाइल जो है वो नॉवल में भी एक रहा है और पोइट्री में भी. Although Hardy deepened, no critic could make a career out of explaining his development. यानी थॉमस हार्डी की डेवलपमेंट एज ए पोइट के ऊपर किसी भी क्रिटिक को शोहरत नहीं मिली, क्योंकि थॉमस हार्डी वो जैसे 1900 से पहले में था वैसे ही रहा. तो थॉमस हार्डी अगर तब्दील होता उसके एज ए पोइटिक करियर में डेवलपमेंट आती तो कोई क्रिटिसिज्म में किसी का नाम बनता ना. तो हार्डी सेम रहा. ही रोट वर्कमैन लाइक पोएम्स, यानी जो आम आदमियों की नज़में थी वो लिखी उसने. फ्रॉम डोमिलिसियन in his teens to the during wind and the rain in his 18s. Hundreds of them excellent. His qualities acknowledged by the subsequent poets as very English. Having no intellectual, political, or artistic program, he is easier to anthologize than to write about. But unpretentiousness should not be misprized. Sketches and the watercolors make a strong contribution to the English art. Hardy जो है at the same time seems a poet and at the same time he seems a very artistic in his nature as well. हेलन गार्डनर का बहुत अच्छा कमेंट है that the new जो कि उसने किया कि in the new Oxford Book of the English Verse 1972 में कि only Shakespeare and Wordsworth had more poems than the Hardy. And same in the Philip Larkin's Oxford Book of the 20th Century Verse में Hardy has more than any other. यानी इस बुक में सबसे ज़्यादा नज़में जो थॉमस हार्डी के जो कि फिलिप लार्किन ने एडिट किया 1973 में. Apart from a few ballads, the poems are apparently personal and occasional, promoted by the place, time, and the mood. The title "Moments of the Vision" suggests Thomas Hardy's tradition from Wordsworth, Shelley, and Browning. कि वो moments of vision में उनसे मुतासर लगता है वो शेल्ले एंड ब्राउनिंग से. He owed much to his friend the Rev. William Barnes, क्योंकि वो कोलोकियल किस्म का देहाती किस्म का शायर था और वो लोकल डायलेक्ट को अपनी पोइट्री में यूज़ भी करता था. तो इसलिए थॉमस हार्डी उसका दोस्त था और वो गिफ्टेड राइटर भी था. गिफ्टेड राइटर ऑफ द वर्स इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड द डॉर्सेट डायलेक्ट. बर्नीस एग्जाम्पल इन द पोएम्स सच एज वॉलेट हिल, ये उसकी पोएम्स हैं बर्नीस की. Lyden Leah showed how local speech could ground a lyric in everyday life. To Hardy's, no word or the thing was in itself unpoetic or poetic. हार्डी के ज़माने हार्डी ये समझता था, हार्डी का फलसफा ये है कि नथिंग इज पोएटिक और अनपोएटिक. इट मेक्स हमारा टेस्ट होता है जो किसी भी चीज़ को पोएटिक बना देता है और किसी भी चीज़ को अनपोएटिक बना देता है. हिज पोएम्स रेंज फ्रॉम द टिनी टू द ग्रेट. आपने वो थॉमस हार्डी की पोएम सुना होगी कि नो बायर, एक बंदा होता है वो अपने घर का सारा सामान उठा कर ना एक रेडी के ऊपर डाल देता है. एंड ही स्टार्ट वॉकिंग एंड वॉकिंग और ऊपर से बारिश हो रही होती है. छोटा सा एक पिल्ला जो है वो उनके उस रेडे के पीछे जा रहा होता है और जो द व्हील्स ऑफ दैट कार्ट हैज बीन dwindling. So that creates a very good picture for the reader. So the Hardy's interest lies not in his attempted philosophy, but in the religious regard for the universe and its inhabitants, a country's supernaturalization. His landscapes are full of the omens and the presents, and he wished to be remembered for his habit of noticing them, as he says in the afterwards. Yes, afterwards उसकी poem है. तो हार्डी के जो थे वो मुख्तलिफ किस्म के ओमन्स कहते हैं, शकूक व शुबा, ये जो हम कहते हैं ना नेक शगुन बुरे शगुन. तो हार्डी के दोनों शगुन्स थे, बैड ओमन्स भी थे और गुड ओमन्स भी थे और प्रेजेंसेस भी थी, एब्सेंसेस भी थी. He take बहरहाल the society and its inhabitants as a great participants of the social drama, where God is an actor, human is an actor, and the society itself becomes an actor in that. It's become the very trilogy
where these God, man, and the society act as actors. If when hearing that I have ये उसकी poem है afterwards की. If when hearing that I had been stilled at last, they stand at the door, watching the full starred heaven that winter sees. Will this thought rise on those who will meet my face no more? He was one who had an eye for such mysteries, and will any say when my bell of acquaintance is heard in the gloom, and a crossing breeze cuts a path in its old rolling, till they rise again and there were a new bell's boom. He hears it not now, but used to notice such things. कितनी खूबसूरत पोइम है उसकी ना Thomas Hardy की. There is a surprising amount of rising here. But Hardy is a surprising writer. The strong metrical tone of his verse carries his unadjusted diction as well. As Pound Simrat Azra Pound has said, Hardy's poems of 1912 and 1913 lift him from his apex. 16 poems from the Going to the Going poem का नाम है. The Going to the Castle brought Waterreal, all good and enough for a lifetime. They are poignant elegies of his wife who had died suddenly and for the love they had at first enjoyed. Alongside the poems Pound, in Nazira Pound mentioned the voice, ये poem का नाम है. Beanie Cliff and After a Journey stands out. बेहतरीन poem ये उसमें से After a Journey में से है. बहुत अच्छी poem है, I love it ना. I see what are you doing. कहते मुझे तुम याद दिला रहे हो वो पुराना जमाना. I see what you are doing. You are leading me on. कि तुम मुझे वहां लेकर जा रहे हो. To the tops, to the spots, उन जगहों पर. We knew when we hunted here together, the waterfalls above which the mist below shone, at the then fair or in then fair weather, कि उस अच्छे मौसम के अच्छे टाइम में घंटा फेयर और में and the cave just under with a voice still so hollow, और एक गार का पस मंजर है जिसमें से आवाज आ रही थी that it seems to call out to me for 40 years ago. कहता है ऐसे लगता है कि 40 साल पहले भी वो मुझे पुकार रही थी गार. When you were all aglow and not the thin ghost that now I fairly follow. कि that image thin ghost के तौर पर, that memory is acting for me like a thin ghost. तो अब हम वॉर पोएट्री की शुरू में हमने बात की है, तो क्या इनसे बड़ा कोई भी वॉर पोएट हो सकता है जिन्होंने डिस्टॉर्शन देखी हो सोसाइटी में? तो थॉमस हार्डी 1915 में उसकी पोएम है द ब्रेकिंग ऑफ नेशंस. मेरे ख्याल में ये डायरेक्टली एड्रेस करती है to the man of war. उसका पोएम का थीम देखें, the breaking of the nations, the nations, only a man harrowing clouds in a slow silent walk with an old horse that stumbles and nods, half asleep as they start. Only thin smoke without flame from the heaps of the coached ross. Yet this will go onward the same. Through dynasties past, yonder a maid and her weight come whispering by. War's annals will fade into the night, or their story die. Or means agar chahiye unki kahani khatam ho jayegi. This poem, Hardy says, was promoted by the farm workers he saw in the Cornwall in 1870 during the Franco-Prussian War. But he did not write the verses till during the war with the Germany of 1914. Hardy was thus a war poet, as was the Kipling, who lost his son and wrote a somber set of epitaphs of the war. तो हम ये अब जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हार्डी जो है वो war poet है. From the 1914 to 18, war was also lies behind Pound's poetry from 1915. And Eliot's The Wasteland. Eliot said that the force and trap was the only good poem he had met with
on the subject of the war popularly. However, war poetry is about the front and by the young combatants. Typically, जैसे हमारे यहाँ हमारी इंडिया के साथ जंग हुई तो क्या नाम है 1965 की, तो उसमें हमारे जो सिंगर्स थे दे हैव बीन singing for the peoples who had been fighting at the fronts. Sage Fried Sassoon, 1886 to 1967, who protested against the mechanized slaughter of the trenches, supremely his friend Wilfred Owen, ये शायर का नाम था, who was killed. And as was the Isaac Rosenberg, he was also killed at there, and the Edward Thomas. Accounts which focus on the anti-war poems. इन जो war poets हैं उनका basically agenda जो था that was to stop the war and to write against the atrocities of the war. Usually employ Rupert Brooks as a foil. Brooke had welcomed the war in the spirit of patriotic idealism. ये जंग जो है वो basically जो यानी एक पैट्रियाट होता है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, और फिर इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो it becomes more exotic or more exemplary and ideal one. If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. तो ये एक सोल्जर का है कि अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊं तो याद रखना कि that there is some corner of a foreign field, or that's forever England. After this death, on his way to Gallipoli, the handsome young Brooke was held up as a symbolic type of the myriads of the young officers lost in the war. After the Battle of the Somme in 1916, the losses of the Dutch trenches belighted the idea of the heroic sacrifice. Poems such as Sassoon's The Grand General, Owen, the anthem for doomed youth, Rosenberg's The Break of the Day in the Trenches, and to his love poems by the Avery Gornish immerse in that stalemate in the mud for which even the professional soldiers were unprepared. इनको arouse किया जाता. The last battle anywhere near the Britain had been the Waterloos. इन ब्रिटेन ने इससे पहले जंग नहीं देखी थी और इतने बड़े लेवल पर जंग नहीं देखी थी. 1815 की थी, 1815 में वाटरलू की जंग ब्रिटेन में हुई. The poems of the Sassoon and the Owens came to fore after 1918 and came to express the national mournings. The outrage sense that the wastage of the trenches must not be forgotten, because the symbolic value to Sassoon's savagely effective protest verse and to the Owens pathos. Both men returned to the front, Owens to die. Sassoon survived. ये दोनों शोरा थे, poets थे. They came to take part in the war, but Owen died and Sassoon survived to write the Memoirs of a Fox Hunting Man, 1928, and the Memoirs of Infantry Officer, 1930. In 1914, poetry was still a natural medium for the expression of public feelings. Poetry basically जो है it expresses more with the human feelings, the feelings of loss. Poetry works best in the good and bad times of the man. The newspapers printed many patriotic poems. Survivors also wrote prose about the war. The novel Death of a Hero, जैसे Death of the Author है तो Death of a Hero by Richard Edgitons, and the memoir Goodbye to All That by Robert Graves. ये मुख्तलिफ इसमें ये important works थे. Both 1929, the home front in the commemorated in the popular Testament of the Youth by Vera Britton. Of the scores of the books about the war, the account by Edmund Bluton of the going to the front in the undertones of the war should be read with the parenthesis by David Jones and the Ford No More Parades. They were against the atrocities of the war. The best poet who came to light in the war and fell in it is the Anglo-Welsh Edward Thomas. Thomas had lived by writing countryside prose and reviewing verse.
until encouraged by the American poet Robert Frost, he turned poet late in 1914. Poems such as Edelstraw and Owl and the Team Head Bros approach the war indirectly through the life of rural England in peaked इन्हीं के भी जंग के शहर में तो जो असरात वही हैं, लेकिन देहातों में क्या हुआ, तो उसने डायरेक्टली जंग को रिप्रेजेंट किया through the images and the metaphors of the rural area. A contrast with the shock texts of the protest poems. इन शहरों में जो है वो प्रोटेस्ट पोएम्स लिखी गई, जबकि उसने देहाती पस मंजर से इनडायरेक्टली टच किया. They have effect of the similes in Homer's life, which liken wartime to peacetime. Sight or the activities. इन्हीं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता जाऊँ, एक पिक्चर आर्टिस्ट है, उसने पिक्चर बनाई वर्ल्ड वार के ऊपर ना, तो उस पिक्चर को उसने दरमियान से डिवाइड कर दिया. एक साइड पे बिल्कुल काली काली सी ग्रे कलर इस्तेमाल किया और दूसरी साइड पे टोटली ग्रीन कलर इस्तेमाल किया कि जंग से पहले जो है पूरी सरजमीन जो थी वो सरसब्ज थी और आफ्टर वॉर जो है वो ग्रे, डिजर्टेड, मिस्चीवियस सी, डिसअपॉइंटेड सी वॉर में कन्वर्ट हो गई. Natural observation occurs and understated symbolic suggestions in a poem like Lights Out, which, like another fine poem, Old Man, makes no reference to the war but accepts the death. Later English poets have been Hardy and Edward Thomas as continuing as English tradition. Yeats dismissed Owen with the word passive suffering is not a theme for the poetry. His own poems on the Easter Rising in Dublin in 1916 strike a more heroic note. Although Owen's pathos can cloy, ये जो क्या नाम है यीट्स है, ये डबलिन की ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो उसने ओवन को एज ए पोएट जो है वो अपनी शायरी में मजीद स्पेस ना दी या एज ए आइडियल उसको नहीं वो कर दिया. The Owen Sassoon story was often recycled later, but the literary merit of the poem has been exaggerated. Precious witness of a traumatic national experience, they are not major modern poems. Through their simple emotions are easier to respond to that the adult poetry of the modernist. तो इसमें जो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर वन की, अब एक वैसे आप ये बात ज़हन में रखें कि कभी भी कौमें जो है वो अचानक इस तरह जंगों में नहीं चले जाती. बहुत सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में पहले चल रही होती हैं, तो लेटर ऑन दे मूव टूवर्ड्स द वॉर्स ना. तो बेसिकली जो 90s के एडवर्डियन ज़माना था, उसमें भी जो था क्या नाम है लॉस एंड डीजनरेशन एंड फियर एंड क्योस जो है दैट वाज प्रीवेलिंग. तो ऑटोमेटिकली मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जंग छिड़ने से ही जो है ना वो शायरी सैड हो गई वर्ल्ड वॉर वन की. तो प्री वॉर पोएट्री भी जो 1971 उसकी 1914 से वर्ल्ड वॉर वन से पहले की जो प्री वॉर पोएट्री है, दैट इज ऑल्सो फुल ऑफ सैडनेस, क्योस, अनसर्टेनिटीज, इस तरह की ना, which had been continued in the later during war poetry. During war poetry वो है जो 1918 से लेकर 1939 तक, 1918 से लेकर 1939 के दरमियान तक की शायरी है, that is called the interwar poetry ना. हम अगले लेक्चर में उसके ऊपर प्रोज के ऊपर बात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.